ऑफ कोर्स वो मुलाकात, जैसे मैंने कहा कि पहली बार हो रहा है कि ट्रेलर अनवेल कर रहे हैं, साथ में लीड एक्टर को भी अनवेल कर रहे हैं, बिकॉज बहुत साल से हमने उनको देखा नहीं है, कैसे दिखते हैं, क्या होता है. लेट्स फाइंड आउट. ऑल आईज ऑन द टुवर्ड्स द स्टेज ऑन द बिग स्क्रीन. क्या, मेक सम नॉइज ladies and gentlemen for Raj. Whoa! There comes the man, ladies and gentlemen. Raj Kundra, aka the Mask Man, is here. So, इससे पहले कि मैं बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाऊं उनके साथ, do you really want him to take off the mask? या ऐसी बात करते हैं ना? ऐसी करते हैं ना? 2 साल हो गए अब तो, हाँ? तो उसके लिए हल्ला मचाना पड़ेगा ना थोड़ा सा. राज भाई, एक मिनट. I think it's time to do the honors. It's time to unveil the lead actor. It's time to unveil that शेर जो कि कब से ऐसे इस मास्क के पीछे है. तो हो जाए. Jarvis, open the mask. Ladies and gentlemen, Raj Kundra! अरे बंद. And here goes the mask. Ladies and gentlemen, Raj Kundra, एक बार जोरदार तालियां for this man. मास्क मैन. हेलो. मास्क उतर गया भाई, मास्क उतर गया अभी. 2 साल इस मास्क के पीछे. 2 साल 27 दिन 14 घंटे. To be precise. Now, when you're facing them, you are literally facing the media and of course the fans and everybody across the globe. What do you have to say? I'm back. He is back. अच्छा, यहाँ ना हम बड़ी मजाक मस्ती कर रहे थे. ऑफ कोर्स वी वर वांटिंग टू नो लिंक कहाँ है, फिर हमको पता लगा पूरी पिक्चर ही बना दी. बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, टेल मी वन थिंग कि नो मैटर हाउ एडवांस दिस थिंग इज, नो मैटर हाउ कंफर्टेबल दिस इज, लेकिन अंदर कितना अनसेटलिंग था इसको पहन के लोगों को फेस करना. You know, honestly, जब मैंने ये मास्क पहना था, it was only out of pain, क्योंकि जो ये मीडिया ट्रायल थी was really painful, and honestly the media trial was more painful than my legal trial that's going on. And I don't blame you, आप लोग अपना काम कर रहे थे, but really the pain was so painful that I just decided to wear a mask and just cover up. I didn't want to be seen, I didn't want to be spotted. मुझे नहीं चाहिए थे photos ये वो सब. But suddenly घर में तो हमारे एक स्टार है, suddenly मेरा मास्क भी स्टार बन गया. तो पहनता रहा और एक मौका मिला एक फिल्म बनाने का, और फिर मैंने डिसाइड किया कि ये मास्क अभी मैं पहन के रखूँगा और उसी दिन उतारूँगा जब हमारी फिल्म रेडी होगी पूरी दुनिया को दिखाने के लिए. एंड इट्स नॉट अ सॉब स्टोरी, इट इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, एंड इट्स ओनली अ स्टोरी अबाउट द जर्नी दैट आई वेंट थ्रू इनसाइड. इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, इट्स अबाउट पीपल, इमोशंस, रिलेशंस, and I'm sure when you see it, you'll enjoy the movie. Absolutely. 3rd November is when we'll get to see this. Tell me one thing, बड़ा अब जो ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, मीडिया ट्रायल की हमने बात की, बट एवरीबडी इज हियर, यू नो, इतना सारा प्रेज, इतना सारा अप्रिसिएशन आपके लिए. व्हाट डू यू हैव टू से? Love you. Thank you. I know there's a lot of people that have faith in me and have faith in the system like I do as well. Matter sub judice hai abhi, and I have full faith in the judiciary. Truth will come out soon. It was painful, and especially when you know you've done no wrong and you have to face such circumstances. Us time pe thoda sa it hurts. And honestly, more than anything, it was painful for my family. And मुझे बोलो जो बोल रहा है यार, मेरी बीवी और मेरे बच्चे पे और मेरी फैमिली पे मत जाओ यार. क्या बिगाड़ा आप लोगों का उन्होंने? Of course, the response, as I said, यहाँ पे सब लोग इतना सारा प्यार दे रहे हैं, बाहर आए हैं सपोर्ट करने के लिए. मुझे ये बताइए, सच में was it difficult to get a director for this, राज भाई?
बिकॉज फराह खान ने तो उन्होंने तो एकदम ऐसा पल्ला झाड़ दिया. Was it difficult कि एक अच्छा डायरेक्टर मिल जाए इसके लिए? And who did you get finally? थैंकफुली मेरी पहली फिल्म है, सोलो हीरो मूवी है, एक ही हीरो है इस मूवी का. नहीं, लेकिन इस फिल्म का सोलो हीरो मैं नहीं हूँ. इस फिल्म का सोलो हीरो एक ही है, वो है हमारे डायरेक्टर शाहनवाज अली भाई. प्लीज कम स्टेज. Give it up for this Shahnawaz. rock star, ladies and gentlemen. Shahnawaz! Welcome, welcome, welcome. Welcome, sir. So good to see you. And yes, of course, that smile says a lot. You know, अभी मैं आप दोनों का ऐसे backstage भी I overheard the conversation, and of course वो जो सच्चाई थी, जो पैशन था ना, वो दिख रहा था, और वो यहाँ पे आई थिंक इस रिस्पॉन्स के तौर पे दिखाई दे रहा है. तो आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां शाहनवाज सर के लिए. भाई साहब, ये कितनी पेड ऑडियंस बुलाई आज. इतना बजट नहीं है. इतना बजट नहीं है हमारे पास. बहुत प्यारी सी छोटी फिल्म बनाई है हमने. तो मुझे प्लीज बताइए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? Where did it all start? Like, did he like come up to you, या you were like चल तेरे पे पिक्चर बनाते? कैसे हुआ? हेलो, कैन यू हियर मी? Yes. सो पहले आइडिया आया कि फिल्म बनाते हैं, देन राज डिसाइड कि मैं जेल जाके आता हूँ. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. वॉल्यूम दीजिए. या आ रही, क्या आवाज़ आ रही है? आ रही है ना? नहीं. सो ऑफ कोर्स वी वर वर्किंग ऑन सम अदर फिल्म फर्स्ट, राइट. एंड देन द इंसिडेंट हैपेंड, एंड राज ने जेल में, you know that whole episode. So once he came out, he described to me कि क्या हुआ उनके साथ में, and then he had a journal written कि every day how it went, किससे मिला, कैसे हुआ, एक दिन कैसे बीता. So it was quite funny. So हम लोग then I met Vikram, our writer. Yes. And then विक्रम, put your hand up. Stand up, विक्रम. ये हमारी फिल्म के राइटर. so ये बेचारे ने जो मेरे स्क्रिबल नोट्स थे, आर्थर रोड जेल के अंदर जो मैं नोट्स लिखता था डेली, और सबने बोला था ये बुक बाहर लेके जाने नहीं देंगे, तो मैंने चड्डी वड्डी में छुपा के मैं बाहर लेके आया इस नोट्स को, और ये भाई साहब ने पता नहीं कैसे पढ़े, बिकॉज देयर वाज वेरी बैड लाइटिंग कंडीशंस और राइटिंग मेरी बहुत बैड थी, बट ही टर्न दैट मेमोइर्स इनटू अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट फॉर आवर फिल्म. थैंक यू. थैंक यू. slowly as you can see, Right. first crew member that came on board, and then we started writing it. Yeah. Then I went to Raj and said, Raj, बहुत मस्त है, बहुत powerful है, let's make a comedy. So he's like, मेरी जेल में लगी है 60 दिन और तू कॉमेडी बनाना चाहता है. So I'm saying, so that's how it started. Right. And he was really a sport, and we decided to do this film. And as he said, it's not a sob story. Yeah. It's a human story. It's a funny story. Yeah. It's not. It's a light-hearted comedy, and हंस रही है. And so this is what it is. This is how it started. There's another thing that I want you to answer, और वो ये है कि usually biopics जब बनती हैं, you know, एक एक्टर को लिया जाता है किसी और की बायोपिक में वो किरदार निभाने के लिए, बट इन दिस केस वाई राज कुंद्रा? आप लोगों को दोनों को आइडिया नहीं आया किसी और को ले? हम लोगों ने बहुत फ़ोन किए, किसी ने उठाया नहीं, कोई रेडी नहीं था. फिर सो दिस वाज लास्ट रिजॉर्ट. तो ये थैंक यू. आई फील सो कॉन्फिडेंट. थैंक यू. मेरी प्राइड ऐसे हो गई है. No. नहीं, जब से नहीं, the minute he came out, ये था, he was not sure कि he can do it, but I was damn sure that he's the only one who can do this, because he has lived the stage. उन्होंने एक method acting की थी जेल जाके. So we wanted to carry forward that thing. So he was the first and the last choice. Right. That's how he came on board. सॉब स्टोरी नहीं है और ऐसा कुछ यू नो दुखियारी कहानी नहीं होने वाली है, बट टेल अस अबाउट दिस. ये जो हमने पोस्टर में देखा है ना राज भाई, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, इफ यू कुड. ऑनेस्टली ये सिर्फ पोस्टर के लिए था, बिकॉज बैक पे सोना एक बहुत लग्जरी है जो जेल में नहीं मिलती. सबको साइड सोना पड़ता है, ऐसे 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 ऐसे, और एक बैरक है जिसमें 50 लोग का स्लीपिंग की जगह है, जो लिखा हुआ है 50 लोग सो सकते हैं, और उसमें हम लोग 250 लोग सोते थे वहाँ पे. और क्योंकि वो हॉल इतना छोटा था, कई बार ये जगह भी कम पड़ती थी, तो हमारे ऊपर भी लोगों को सुलाते थे जिनके पैर नीचे नहीं लगते थे. तो these were the kind of conditions we were living in, and it's sad. You know, that's what I'm saying. ये story मेरी नहीं है यार. It's more human rights, people stuck in the system. So I hope ये message जाएगा बाहर, and we'll try and make things speed up faster
in India. But ऐसे सोते थे हम लोग, ये सिर्फ फोटो के लिए था, ये मुझे इतनी लग्जरी नहीं मिलती थी, साइड करके सोना पड़ता था, और it was hard. So whatever we've seen on that big screen, sir ने तो मतलब ऐसा personal experiences हैं, वो writer साहब, और आपको इतना सब कुछ कैसे पता है? इन्होंने बताया डिटेल में काफ़ी कुछ, वो राइटर भी जा चुके हैं एक बार। वो यही मेरे को पता करना था, ये किस लिए गए थे? वो बाल ऐसे नहीं गया उनका, वो बहुत ऐसा। ये अभी बहुत राज खुलने वाले हैं, and I'm sure you have a lot of questions. So on that note, can we have the chairs? है ना? हो जाए, I know you have a lot of questions, so shoot. बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, केस से जुड़ा सवाल अभी हम नहीं पूछ सकते, ऑफ कोर्स ऑनरेबल जुडिशरी का जो फैसला है वो अभी तक आया नहीं है, वो अभी केस चल रहा है, एंड इस फिल्म से जुड़ा जो कुछ पूछना है पूछ लो। But one second, before we speak about anything, I just have a few thank yous. सबसे पहले अनिल तिरानी सर को बहुत थैंक यू। हमारा प्लान तो यही था कि हमने एक छोटी फिल्म बनाई है, OTT पे डाल देंगे और सब काम ठीक हो जाएगा, और काफ़ी सारी इंक्वायरीज आई, तो सर ने बोला मुझे फ़िल्म दिखाओ। तो जब अनिल तिरानी जी आए फिल्म देखने के लिए, तो उन्होंने बोला अब ये फिल्म मेरी है, ये कहीं नहीं जाएगी, ये सिर्फ थिएटर्स में ही जाएगी, और इसकी रीच बहुत ज़्यादा दूर जाएगी। सो थैंक यू सर फॉर बिलीविंग इन द फिल्म। ऑनेस्टली ही इज़ रियली बीन अ वेल विशर, हमारे बहुत ही प्रिय दोस्त है, शिल्पा के दोस्त है, एंड even through the hardest times, he's really been there for us. So thank you, sir. Really, it means a lot. I want to thank the whole team, Vikram, and all the cast and the crew, everyone that's worked hard on the project. You know who you are. You're all here in the front row. Without you guys, ये film कभी बनती नहीं. I want to thank Yashmin and Aman for my transformation. पहले मैं थोड़ा मोटा होता था, तो body shorty मिला के दिए इन्होंने. Thank you for believing me and helping me in the toughest of times. My family, my mum, dad, they've been really supportive. I'm sorry for what they had to go through, and we're going to make it okay very soon. My sister's come all the way from London. Thank you for coming. And last but not least, for me, I really need to thank my wife. She has stood like the Rock of Gibraltar. अगर वो नहीं होती ना, अगर वो नहीं होती तो I wouldn't have survived inside her. I was ready to finish everything inside. But she gave me hope, she gave me faith, and she said, come out, we're going to sort this out. Those 63 days were the hardest days of my life, and I hope किसी को ऐसे दिन ना देखने पड़े, भगवान ना करे. But thank you, Shilpa. You mean the world to me. Thank you for everything. And we're here. What doesn't kill you makes you stronger. Wow. Thank you. Yes. It's a heart-wrenching saga indeed, shown in a very comical way, never seen before. Why did you agree to do it in a comical way? You know, funny enough, जब आप एक British citizen को ऐसे scenario में जेल में लेके आते हो, and everything becomes funny. The way you're given your food, your पानी वाली दाल, रहने की जगह, it was tough. But even when I was writing it, it was very satirical. It was like, ऐसे दिन आ गए, ये देखना पड़ रहा है. Toilet, I had a knee problem, तो मैं Indian toilet में squat नहीं कर सकता था. तो they gave me an English toilet. तो वो English toilet भी इतना horrible था that आप फिल्म में देखोगे क्या हुआ था मेरे साथ. And all this is true. Everything that's happened is backed because जब भी आप फिल्म सेंसर के लिए डालते हो और based on a true story मांगते हो, तो बहुत सारा supporting evidence चाहिए होता है, जो हमने दी है. काफ़ी सारे लोग जो अंदर थे, जिनकी bail आ चुकी थी, और हमने थोड़े लोगों को हेल्प किया बाहर आने में. So they've all given their testaments. Human rights ने जेल को रेड किया था. They've also seen what the situation's like inside. So the reason to turn it into a black humor, because जेल ऐसे नहीं है जैसे हम लोग अमेरिकन जेल जो मूवीज़ में हॉलीवुड में दिखाते हैं कि हर कोई आता है चाकू मार के चला जाता है. We've always shown jail in such a dark, grungy way. Honestly, it's a horrible place. It's the worst place on earth. But it was what it was. And हंस के थोड़ा टाइम निकाल दिया था वहाँ पे. And there are real people inside, यार. I mean, this is honestly, Arthur Road is not a jail. ये detention center है जहाँ पे आपको भेजा जाता है just so that police की जो questioning और witness statements है कोई tamper ना कर सके. And उसके बाद you come out and then you face your trial. तो एक detention center में they're treating you worse than criminals. You're just accused. So that I didn't like. But I think the message is loud and clear that definitely reforms are needed. So that's why we decided to go with a very light-hearted take on the film. As you said, the matter is subjudiced. So did you have to seek some legal permission to make this film? Ma'am, this film has nothing to do with the case at all. We don't even mention the case once. It's my 63 days. जिस दिन से मैंने वो लाल गेट से एंट्री मारी है और जिस दिन से मैंने एग्जिट किया, the film is only about that.
You seem to be a very big-hearted man to show all that, you know, being so courageous. Would you like to send some message, you know, to people who really, it's the survival of the fittest, but those who are surviving there inside, would you like to give some message? Ma'am, firstly, I did this, and honestly, if Shilpa and I thought there was even an ounce of truth in the allegations, or अगर मैं कुछ guilty भी होता ना, तो कई जगह, you know, शर्मी छुप के, we would have just gone underground. I came out, and I came out like a lion because I knew we had done no wrong. So, like I said, matter sub judice, we have full faith in the judiciary. For the people stuck inside, I'm doing whatever I can to help those. कई लोगों के बेल आ चुके हैं मैम, 500 रुपये से भरना होता है और उनको बाहर निकाल सकते हो, बट दे डोंट हैव एनी फैमिली आउटसाइड. उनको पता नहीं कि कहाँ पे जाके ये पैसा भरो और बाहर आओ. तो जितने लोग मेरे बैरक में थे जिनके बेल आ चुके थे, आई हैव हेल्प्ड गिने चुने half a dozen people, and I'll continue to do that. I'll continue to help. एक लीगल एड हमने सेटअप किया हुआ है ऐसे लोगों के लिए जो अंदर फंसे हुए हैं बेचारे, and they're breadwinners for their family. So like I said, अंदर जो आर्थर रोड में है वो accused है, वो guilty अभी नहीं है. जब वो guilty करार करेंगे तो that time they'll go to a proper jail. So yeah, I hope I can help more people. Raj sir. Hi. Priya here from India TV. हमने ट्रेलर में देखा कि लोग आपको पॉन किंग कह के बुलाते हुए नज़र आ रहे हैं, और शायद जब आप जेल में थे तो कई लोग बाहर भी ये कहते हुए नज़र आ रहे थे. तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे, आपका टेक क्या है? एक गाना याद आ रहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. But honestly, कोई शेर को गधा बुलाए तो वो शेर गधा नहीं बन जाता. So it's okay. हेलो राज, अंबिका दिस साइड, यहाँ पे मुझे जानना है आपका जो टाइटल है UT69, अगर आप इसको डिकोड करो, बिकॉज बहुत लोग जानना चाहते हैं इसका मतलब क्या है UT69 का. So funny enough, UT stands for under trial, and 69 was the number given to me as I went in. That was really horrible, you know. Of all the numbers you could have given me while I was under trial, they gave me 69. But then I googled it, and उसमें आता है कि it's the angel number for balance and peace. That's the version I like. Hi Raj sir. Hi Raj sir. हाँ जी. Yes. I'm sure, sir. वो अब सोच है ना हमारा अभी. There was a reason why some of these sites get 1 million viewers in a week, and it takes other religious sites years to get it. So हमारा देश enjoy करता है. कहते हैं ना दो चीज़ें बिकती हैं इंडिया में और बॉलीवुड में, शाहरुख और सेक्स. तो that's what they say, and that's what happened. Hi Raj sir. This is Antitash from News 18. Hi. Said. You said some lovely things about Shilpa ma'am. You called her your rock. And I would want to ask you, what was her reaction when you first told her that, you know, we are planning to make a film on this? And has she watched the film yet? What's her feedback like? That's a great question. तो इतनी दूर थी because I didn't want to go too close. जब मैंने पहली बार पूछा कि एक स्क्रिप्ट है, तो I asked her, and then I was waiting for an answer, and I just turned the other way, और वहाँ से पहले एक चप्पल आई, पटाक करके मेरे फेस पे लगी. तो I realized कि first was looking a little dicey कि शायद ये शायद नहीं बनेगी. बट फिर मैंने शाहनवाज को पुल किया और बोला तू समझा, मेरे से समझाया नहीं गया कि ये फिल्म क्या बनने वाली है. सो ही गेव हर अ वेरी स्मॉल नरेशन. तो शी थॉट अबाउट इट एंड रियलाइज दैट एक तो इट वाजंट अगेंस्ट द सिस्टम इन एनी वे, इट वाजंट अबाउट द केस, एंड शी फेल्ट दैट इट वाज अ ह्यूमन स्टोरी. शी वाज वेरी सपोर्टिव, बट शी सेड ये एक्टिंग कर लेगा? तो मैंने कहा हाँ मेथड एक्टिंग करके आया हूँ, मैं कर लूँगा. So she agreed. She's very sweet. She's always supported. She's supported me in everything I've done because she has faith, and we're best friends. And if best friends can't talk to each other and communicate, then you shouldn't be in a marriage. So she was very helpful there. Yeah. Raj sir, this side, left hand side. Y'all left. Sorry. Has she watched the film? She has watched the film, and touch wood, she's very proud of me. So that's my win. Raj sir, here, Vishal here. Hi Vishal. राज सर, मेरा सवाल आपसे है. हमने देखा कई बार ट्रेलर में आपको कहा गया कि शिल्पा का हस्बैंड है, क्या बिग बॉस के घर पे गए थे, बट कोई ऐसा फ्रेंड आपका उस दौरान बना हो जो आपको हमेशा पिलर की तरह, डे 1 से पिलर की तरह है? क्योंकि हमें ऐसा भी पता चला कि 2 बड़े सितारे थे उस जेल में उस दौरान. तो कोई ऐसा उनके अलावा या फिर कोई ऐसा फ्रेंड जो आपको हमेशा याद रहा हो? एक डिसफंक्शनल फैमिली बनी जाती है. मतलब जिसके साथ मैं राइट पे सो रहा था, शायद ही वाज अक्यूज्ड ऑफ 88 मर्डर्स, और जिसके साथ मैं लेफ्ट पे सो रहा था उसका कुछ चाइल्ड रेप का केस चल रहा था. तो दे वर
creepy people around. But I was given a couple of जवाबदार्स जिनका काम ही यही था कि just keep an eye on Raj, और मुझे बोला गया था कि आप किसी से बात नहीं करोगे और आपसे कोई बात नहीं करेगा. और मुझे लगा हफ्ता 10 दिन में बाहर आ जाऊँगा, कौन सी बड़ी बात है. मुझे नहीं पता चला था that this 63 days तक जाएगा. तो I made friends जो मुझे एक दो लगे जो थोड़ा सा decent बात कर लेते हैं, और जो जवाबदार थे who were keeping an eye on what's happening, उनसे भी दोस्ती हो ही जाती है यार. When you're staying with someone for 60 days, you become connected, and you'll see the film and you'll understand the bond and the relationships जो हम लोगों ने बनाए एक साथ. There were some good friends I made inside. Poor things, they were also stuck in various cases. I'll help them as much as I can, but yeah. Any known face? नहीं, I mean, I don't know why, for whatever reason, all the VIPs को कुछ 10 नंबर बैरक दिया जाता है जो सिर्फ 5-6 जने वहाँ सोते हैं. उसके लिए आपको बिल्डिंग लोन फ्रॉड, बैंक फ्रॉड करना पड़ता है, तो वो मैंने किया नहीं था. तो मेरे बैरक में जो कॉमन बैरक है वो जो पेटी थेफ्ट के लिए था, तो मैं वहाँ सोता था. तो दूर से आई थिंक आई कांट रिमेंबर हुआ. सो एजाज खान मिले थे अंदर, वो एक सामने बैरक में थे. हाँ, वो था, एजाज भाई भी था वहाँ पे. हाँ, अरे we used to share biscuits, पानी, बहुत हेल्प करते थे एक दूसरे को. It's very sweet. Who else was there? I didn't meet anyone else other than that. No, only him. Hi guys, this is Nikita here from India Forums. My question is to Shahnawaz sir. ये जो फिल्म बनाई हुई है, राज के लाइफ के कुछ सेंसिटिव एस्पेक्ट्स दिखाए गए हैं इसमें, बट एज यू सेड कि आपने काफ़ी लाइट हार्टेडली बनाया. सो हाउ डिड यू बैलेंस इतने सेंसिटिव टॉपिक को प्लस विद अ वंडरफुल स्टोरी टेलिंग दैट यू हैव डन? Sorry Nikita, I got lost. ये जो है फिल्म जो बनी है राज के लाइफ के काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक पे आपने बनाया है, एंड यू हैव बैलेंस्ड इट वंडरफुली विद स्टोरी टेलिंग एज एन आर्ट. हाउ डिड यू मैनेज टू बैलेंस सच अ सेंसिटिव टॉपिक इन दिस वे? See, the approach was really simple. We didn't wanted to make a sob story, and as Raj said कि एक बार जब वो जेल में गए ना, वो अकेले नहीं थे वहाँ पे. There were 200 people. So वो सिर्फ एक राज की कहानी नहीं थी. Although it starts with Raj, but there are other 199 people. So ये उनकी भी कहानी थी. So the minute we realized, Vikram, our writer, and us, we all sat together, and when we realized this, so it was no longer Raj's story alone. So that's how we, once you see the film, you realize it's not just Raj's story, but it's about all those people, how they survive. And वो होता है ना, मतलब in the worst of situation also, जैसे कोविड में भी हम लोग थे अंदर थे, but we managed to live, like we made it work. कुछ ना कुछ करके हम कर ही रहते. तो जेल में भी वही था, है for whatever reason they are inside, but जीना तो है. So it's a story of how people are surviving inside and how they go day by day, every day, with each other's support or not, whatever. So that's how we came up to the story, and that's how we balanced the film. So it's not just about from Raj's point of view, it's about from all those people जो वहाँ पे थे, उनके point of view से भी film थी. Coming to you, Raj, these days were one of your hardest days that you've ever lived. फिर आपने एक्ट भी फिल्म में किया है, नरेटिंग दोज डेज. तो पहले तो आप रीलिव कर रहे हो वो फिर से, तो ऐसा कौन सा एक चीज़ है जो आपके लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल था कि फिल्म बनाते टाइम भी दोज रीलिविंग डेज वर वेरी हार्ड फॉर यू? कोई एक ऐसा मेमोरेबल चीज़ बताइए. So when Shah told the team that एक newcomer राज खुद अपनी फिल्म बना रहा है, तो the team, the assistant ADs and everyone said कि अरे यार इसको तो टिकटॉक्स में देखा है, ये जोक्स पति पत्नी पे जोक्स करता रहता है, तो ये कहाँ से एक्टिंग कुछ कर पाएगा. हाँ, हंस लो भी कमीनो. तो मैं I took acting classes from a great acting coach who's trained Irfan Khan sir के साथ काम किया उन्होंने, अवनीश sir करके. He was very helpful. Shah was very helpful in helping me put this film together and bring out the emotions. But funny enough, day one पे ही मुझे लगा montage shot से start करेंगे, easy रहेगा, मैं थोड़ा सीख तो लूँ ना basics. भाई साहब ने second day पे ही एक वो सीन करा दिया जब मैं पहली बार शिल्पा से बात करता हूँ फ़ोन पे. तो I was dying for a call. 7-8 days निकल चुके थे. पहली बार हमारी लाइफ में शिल्पा and I have not spoken in 7 days. तो जब वो पहला कॉल मिलता है, it was just supposed to be regular, hello, hi, सब ठीक है, bye. But when I started that call, I just started bawling. I just started crying. It just reminded me of the day when I spoke to her. And no glycerine, nothing. In fact, I don't think I used a drop of glycerine in the whole film, and I've cried a lot. So yeah, maybe some of the method acting came in handy. But jokes apart, it was just that was the hardest scene for me when I remember breaking down and there was just silence on the sets, and everyone said, "You know what? ये कर लेगा film." नहीं, उसके बाद एक और था, इन्होंने ये पूरा रो के पूरा सीन विन कर दिया. हमारी छोटी सी पिक्चर है तो एक ही कैमरा से हम शूट कर रहे थे. सो ये रो के पूरा उन्होंने सब कुछ टेक दे दिया, एंड वी ऑल साइलेंट कि यार कि मतलब वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि राज इतनी अच्छी एक्टिंग करेगा.
And then I went up to Raj and I said, Raj, one more yaar, sorry, एक और करना पड़ेगा. So then he has to cry again. We have to take another take. But That he was did hard. over, like he did it again and again. I think that was the hardest. Yeah. But when you remember jail, रोना आ ही जाता है. Easy था. हेलो सेंटर ऋषि फ्रॉम फीफा बूज. सर जैसे कि आपने पहले मेंशन किया है कि आप मतलब डे वन से अपनी जर्नी आप लिख रहे थे, तो क्या आपने पहले डिसाइड किया था कि बाहर जाने के बाद आपको अपनी मूवी बनानी है अपनी जर्नी पे? मैं लिख रहा था एक बुक के लिए, मेमोइर्स ऑफ माय टाइम इन जेल. तो मुझे बुक ही बनानी थी 12 की. आई वांटेड टू राइट अ बुक. तो नोट्स लिख रहा था. तो भाई साहब आए मेरे पास आफ्टर, बिकॉज वी वर फ्रेंड्स फ्रॉम बिफोर. तो पूछा हाउ वाज इट इनसाइड, क्या हुआ. मैंने कहा अभी पूरा आई एम नॉट गोना गो थ्रू, ये मेरे नोट्स है, आप पढ़ लो. और साथ में लेटर्स जो शिल्पा मुझे लिखा करती थी और मैं उनको लिखा करता था, तो इनको दिया मैंने. एंड ही केम बैक आफ्टर 30-40 डेज़ विक्रम जी के साथ कि ये देखो हमने पूरी स्क्रिप्ट बना दी, फिल्म बनाते इस पर. मैं कहता पागल हो क्या है, एक्टर नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा. एंड ही सेड नहीं, मुझे न्यू कमर चाहिए, आई हैव गॉट समबडी इन माइंड, मिल जाएगा. आई डिडंट नो इट वाज मी. Hello, this side, your left hand side. Yeah. Hi Raj, Shilpa here from Mayapuri magazine. शिल्पा नाम तो सुना है. Well, Raj, आपने मतलब आपके मोटिव्स क्या है, मतलब बाहर आकर जब अपनी रियल लाइफ स्टोरी को लेकर आपने एक मूवी बनाई है, व्हाट इज योर मोटिव, या फिर इसके पीछे कुछ रीजंस है इस मूवी को लेकर आने के लिए? You know, it's a tough question, and unfortunately in our country जो दिखता है वो बिकता है. और मीडिया ने तो बहुत कुछ दिखाया जो शायद सच भी नहीं था, सच था नहीं था. I won't get into it. तो when we started to make this film, I wanted to make it with honesty. That ठीक है, आप लोगों को जो perception आपने create कर ली है, जो वो trollers है, haters है, it's all media derived haters that I have at the moment. It's fine. The idea to make this film was just let people see what has happened inside. It wasn't a sob story, it wasn't a whitewash, but understand what somebody goes through. And that was the only reason we sort of, put this film out there. There was no motive or there was no incentive का ये फिल्म आएगी और वाइट वॉश हो जाएगा, क्लीन अप हो जाएगा. यार अंदर मुझे क्या क्या बुला रहे थे. एंड आई हैड टू हेयर people from all classes of life saying अरे शिल्पा कितनी हॉट लगती है. Then Sunny Leone would come on the TV जब TV time मिलता था, अरे बाथरूम जाना पड़ेगा अभी. तो you hear like shit stuff like this. You had to sit and listen to all this stuff, and it was very derogatory and very horrible. थोड़ा सा मैंने ट्राई किया था लॉ एंड ऑर्डर हमारे बैरक के अंदर क्रिएट करना, बिकॉज एवरीवन वाज स्मोकिंग बीडीज एंड इट वाज फुल ऑफ स्मोक. तो एक एरिया होता था मंदिर गली जहाँ पे ऑल द हिंदूज वुड गो एंड प्रे. फिर एक मस्जिद गली होती थी जहाँ पे मुसलमान होते थे. तो आई सेड यार जहाँ पे एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, इस हाफ पे तो सिगरेट मत पियो. तो आई वेंट टू द जेलर एंड रिक्वेस्टेड मेक अ लाइन, और इस साइड आप स्मोक करो, इस साइड मत करो. सम पीपल लाइक मी फॉर इट, सम पीपल हेटेड मी फॉर इट, बट yeah, I tried to make some changes while I was inside. Yeah, hi, this is Sohail. राजेश शारिक फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. आपसे जानना चाहेंगे कि आपने शिल्पा शेट्टी जी से कितने एक्टिंग की टिप्स ली इस चीज़ के लिए? बताओ सर, बताओ. वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के रंग पकड़ लेता है ना. तो थोड़ा सा रंग पकड़ लिया पिछले 14 साल में. She didn't get too much involved. She was helpful. She just said, just get a good acting coach. She had full faith in Shah. And I think when you see the film, you tell me how it was. I don't know if it's a performance or if it's just reliving life again. It was hard, it was difficult. And I hope I've done a good job. Hi, this is Sohail from Instant Bollywood. I would like to congratulate you. As you said, like it's about 60 days, 62 days of your... 63. 63, I'm sorry, yeah. तो आपने बताया कि विथ वेरी ऑनेस्टी जो चीज़ें अंदर हो रही है, और आपने ये चीज़ भी बताई कि वहाँ पर जो आर्थर रोड जेल है वहाँ पर लोग आर नॉट एक्यूज, लाइक एक्यूज होते हैं ट्रायल, मतलब पीपल की जो ट्रीटमेंट होती है एक्चुअली वो बहुत ही बुरी होती है. तो यू आर गॉन लिटिल बिट अगेंस्ट द सिस्टम. अगेंस्ट मतलब कि आप जो ऑनेस्टी से जो चीज़ बताना चाह रहे हैं, तो इट इज़ अबाउट लाइक सिस्टम के थोड़ा अगेंस्ट जाना. तो ये चीज़ भी मतलब जब फिल्म मेकिंग के टाइम पर थोड़ी ख्याल आई कि ये चीज़ थोड़ी शायद फिल्म रिलीज होने के बाद इट कुड बी अ लिटिल प्रॉब्लम बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम, एंड मे बी आगे फिल्म रिलीज होने के बाद शायद इस चीज़ को कंसिडर करें और आपको होप लगता है कि थिंग्स विल चेंज. एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन आल्सो, यू कैन जस्ट आंसर दिस. ये स्टार्ट कर लूँ? हाँ ठीक है. So firstly, the film is not about the system. The film is, once you're trapped in the system, then there's a legal loophole. एक बार आप arrest हो चुके हो तो ये नहीं कि आप सीधा बाहर आ जाओ. You have to go through the whole rigmarole. और सबके लिए एक ही है. It doesn't matter if it's me, VIP, celebrity, सबके लिए एक ही system है. एक बार आप arrest हो चुके हो,
JC, PC, then you have to go through the whole thing. So it's not against the system. It's just that the system is as such that there are people inside, like I said, jinki bail aa chuki hai, but unko bahar nikalna nahi aata. So that's not against the system. That's just unfortunate that या तो उनके पास कोई फैमिली मेम्बर नहीं है या उनके पास वो 500 रुपये देने के भी मीन्स नहीं है. तो काफ़ी सारे जने क्राउडेड जो जेल हो रहा है इस वजह से हो रहा है. आई थिंक एटलीस्ट 20-30% जिनकी बेल आ चुकी है, इफ़ द गवर्नमेंट कैन हेल्प दम कम आउट फॉर दैट 500,000 रुपये, बिकॉज गवर्नमेंट हर कैदी पे 9,000 रुपये महीना का खर्चती है. 300 रुपये पर डे खाने का बजट होता है एक जने का. तो वो 500 रुपये के लिए अगर आप एक जने को निकाल दो तो आपका 8,500 रुपये महीने का बच जाता है. सो इट्स अबाउट दैट, इट्स नॉट अबाउट द सिस्टम इन एनी वे. And the reforms will help if we can help. Legal aids can be set up to help these poor people that have got their bail legally. कि उनको कैसे बाहर निकाला जाए. अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन कि नाउ यू बिकम एन एक्टर और शिल्पा ने भी आपको थम्स अप दे दिया है, तो कभी ऐसी बात होती है कि यार शिल्पा चलो हम भी मिलकर कोई मतलब साथ में कुछ काम करेंगे और इफ वी सी यू एंड शिल्पा टुगेदर इन एनी ऑफ द मूवीज, उस पर कोई बात हुई, कोई चर्चा हुई है? मैम अभी मैं न्यू कमर हूँ सर, और वो सब A-listers हैं अभी शायद. पर फिर भी सर एक साथ में हम देखना चाहेंगे आपको, चाहे वो छोटा सा कैमियो हो या व्हाटएवर, बट देन वी वुड रियली लाइक टू सी यू एंड शिल्पा टुगेदर. सर अब तो टिकटॉक भी बैन हो गया इंडिया में. तो इंस्टेंट रील कर लेंगे आपके लिए. थैंक यू सर. इंस्टेंट बॉलीवुड के लिए इंस्टेंट रील. थैंक यू सर. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. Hello, sir. We'll take one last question, right? They will increase. Trollers, recently I saw, I think, Karan Johar's interview saying that he's used to trollers and this snake sign comes up every time people talk about him. I've become like that also. I'm so used to it. Let them talk. They're keyboard warriors, faceless people. Unka to kaam hi hai na bolna. They can't do anything better for themselves. So I've just become so used to it. Shuru mein it used to be very difficult. And Shilpa said you have to be careful. Jo yahan hai, yahan nahi aana chahiye. You have to be very intelligent in the way you handle these people. Aur main unko kyun bhau दूँ? Why shall I reply to them and say, "Arey, why are you saying this? Ye hai, wo hai." Time will heal. Like I said, matter sub judice hai. When the courts pronounce me guilty, not guilty, that time, things will come to light. So I don't care about trollers. They don't bother me. The more, the better. They make me stronger. Raj. I don't know who those people are who are instrumental. So we have to find out what actually happened, and you guys always get to know things first. So let me know who's instrumental in this. We take Raj, one last sir, question, one last right? question. Oh, ma'am ne keh diya. I'll come to you, sir. So yeah, I'm Mansi from Awesome TV. So yeah, I wanted to know कि when did you decided कि अब आपको मास्क निकालना है और सबको फेस करना है? So how was it? Like I said, मैं कोई स्टार नहीं हूँ. मेरे घर में एक ही स्टार है. तो मेरे लिए ये मास्क मेरा स्टार बन चुका था, and this was my support system. I kept it on only for one reason, that trollers should troll. मुंह दिखाने के लायक नहीं है, face cover कर रहा है, links भेजो, all that drama that happened ना. I wanted people to keep saying that and keep remembering it because public memory is short. अगर ये मैं पहले दिन मास्क उतार देता तो ये फिल्म भी लोग शायद बोलते हैं अभी क्या देखनी है. तो I think this has led up to this film. Somewhere down the line I realized I'll use this as my star, keep it on and let people keep reminding me and let people realize what they've said, they can eat their words in the future because whatever they troll me for is not the truth. Thank you. Raj, last year about mask के बारे में पूछूंगा मैं. प्रशांत from Indie TV. Hi sir, how are you? ये I'm fine. पहली चीज तो ये इतने सारे डिजाइनर मास्क कहाँ से आपने लिए और कितने हैं आपके पास? ये वाला तो मेरी बहन लंदन से लेके आई है. Okay. The official Iron Man replica, which I have to say is quite funny. There's irony behind this because इस बंदे के पीछे जो ओरिजिनल एक्टर था वो भी कभी लाइफ में जेल गया था और बाहर आने के बाद एक एक्टर बना. क्या बात. और बाकी मास्क जो है बाकी 5-6 मेरा बेटा ले गया है और अभी सारे फैंस मांग रहे हैं तो मैं अभी बांट रहा हूँ सबको मास्क. मुझे नहीं चाहिए. एक तो हाल ही में उर्फी जावेद को भी भेजा बेचारी को. But actually, I have to thank also Farah, Munawar, Urfi. They were not part of this film. They had nothing to do with it. They didn't take a single minute to say, Raj, we're there to help you. All three came forward and helped promoting the movie. Had nothing to do with the film at all. So it means a lot because you realize who your true friends are. जब आप अंदर जाते हो या you go through this adversity. तो एक टाइम पे मेरे फ़ोन पे कुछ 3-4 हज़ार कॉन्टैक्ट होते थे. आज मैं 100 कॉन्टैक्ट के साथ घूमता हूँ because I've kept my true friends close to me and the ones that weren't true, I've let them go. राज सर लास्ट क्वेश्चन. अब जब भी आपकी स्पॉटिंग होगी तो आप बिना मास्क के नजर आओगे. Promise. ऐसा मान सकते हैं. Promise. बिना मास्क. ये वादा रहा.
मास तो आप सबको मिल गए ना आज यहाँ पे. बट ये कल को ये मत बोल देना राज, आप मास में ही अच्छे लग रहे थे. Alright, so on that note, ladies and gentlemen, that's all we have for you. Thank you so much. UT 69, 3rd November. Photo op. And yes, it's time for the final photo Yes. op. But uske liye, it's only fair that we invite on stage this rock star, as I always call him, AA Film se Anil Thadani sahab. Make some noise, please. Give it up for this man, ladies and gentlemen, who's supported good cinema in our country. Sorry. और हमारे प्रोड्यूसर, फिल्म के असली प्रोड्यूसर, आ जाओ सामने. कृपा. Kripa Jai Singh, ladies and gentlemen. And guys, a big thank you to all my team. Max Marketing, you just rocked it. Idea, Sanchita, thank you. Everyone involved because the idea was so different. ऐसी फिल्म को प्रमोट करना easy नहीं है. हमारे पास ना कोई स्टार है ना कुछ है. Come sir. So thank you guys, all the team. Varun, you rock. Sanchita, you rock. Thank you. Means a lot. Thank you. That's music director Prince. ओहो, हमारे फिल्म के सेकंड असली हीरो प्रिंस बोला बैकग्राउंड स्कोर. हमारे डीओपी केविन. Come. That's our cinematographer Kevin. Okay. Preeti, come on. Sure. Check. Come on, give it up for the entire team, ladies and gentlemen. UT 69. By the way, ये हम सबकी पहली फिल्म है. सबकी पहली फिल्म है. Yes, come on, go. Click. And I have to share this with you that maximum लोग जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, these rock stars जिनको इतना सारा प्यार मिल रहा है, उनकी ये पहली फिल्म है और पहली बार में धमाका है बॉस. Come, there's Amar and Mahesh, our actors from the film. Please come.